Hello, Rush. How are you? Welcome in. हाँ संजना जी, welcome in. Hello. Hi Dara. Hello Anu ji. How are you? How's everyone doing? Hare Krishna Sanjana. Okay, let's start with Rush. What's going to happen between you and Rochelle? Rush, you'll have to wait and watch. It clearly shows here that uh, you've been wanting to achieve something, but you have to realize that certain things do take time, and like, how to explain this? Like, universe is unfolding at its own pace, and you're being required to be very patient about it because this connection, this experience is something you'll have to find out on your own. Okay. uh Anuji, Matarani's message for you. Hello Simran, welcome in. How are you? ठीक है। अनु जी, जो हो गया सो हो गया, ठीक है बाबा। आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सोचो, ठीक है? क्योंकि देखो, जो आपके साथ आगे नहीं बढ़ा है किसी रीजन से नहीं आगे बढ़ा है ना, क्योंकि देखो कमी तो है नहीं आपके पास किसी चीज की। कमी ना होते हुए भी कुछ आपके फेवर में नहीं काम किया है, तो डेफिनेटली किसी रीजन से नहीं किया है ना। आप वो माइंड में रख के आगे बढ़ना है आपको, कि आप जिसके साथ कंप्लीट फील करोगे वो आने वाला है। एंड उसके साथ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ठीक है? हेलो गोल्ड मिश्रा। हेलो स्नेहल। हाउ इज एवरीवन? You like, when did I start getting uh these top fan things? What's a leaderboards? Okay, got it. But like, since when did I have a leaderboard? Yeah, it's whatever. Um, okay. Dara, why do you not get any internships? Partially it's because of how the market is going right now, right? Because the current workforce, the market, the industry isn't doing very well, you know. So they're being very picky with who they have, who becomes a part of their team and all of that, right? So it's more of how the general economy is going rather than something you are struggling with. Okay. Um, okay, Sanjana. Thank you, Dara. ओके। हाँ, क्योंकि देखो, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं ना, और बोलते हैं ना कि कृष्ण काली में अंतर नहीं है। तो लाइक, वो जो गॉड को कनेक्ट करते हैं, उनका अपने गॉड से कनेक्शन डीप हुआ है ये दौरान। तो लाइक, उनका ना ये टेलीपैथिकली कनेक्ट करना इज बिकम इजी फॉर हिम, ठीक है?
तो आई डोंट थिंक वो रियलाइज करते हैं कि कॉन्स्टेंटली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वो, ऐसे यू नो आपको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। बट हाँ, आपके बारे में इतना सोचते हैं इसलिए आप वो फील कर पाते हो। लेट नाइट फीलिंग्स की बात की जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको रियलिटी हिट कर रही है कि फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। अ, तो लाइक ऐसा हो जाता है ना कि फाइनेंशियली मैं उतना अच्छा नहीं हूँ तो कैसे एक फैमिली मेंटेन करूँगा, तो एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है आपको लेकर के, आपके साथ एक फ्यूचर शायद पॉसिबल नहीं। सिमरन, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? केओस है बहुत सारा, ठीक है। पहले तो क्योंकि जो कमिंग टाइम है उसमें आपका ओल्ड एनर्जी निकलने वाला है, तो अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में थे और ऐसा है ना कि लाइक नहीं समझ में आ रहा था क्या चल रहा है, क्या करना है, वो सब है ना, तो पास्ट की एनर्जीज यूनिवर्स निकाल रहे हैं आपके लाइफ से, तो वो देखो क्लियर करते हैं, किसी भी चीज़ की सफाई करते हैं तो पहले तो बहुत सारा क्योस आता ही है ना, तो वैसे ही है कि आपके लाइफ में भी बहुत थोड़ा बहुत ना क्योस आएगा। तो लाइक क्योस रहेगा कि ओल्ड एनर्जी क्लियर हो रही है इसलिए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपको जैसा इंसान चाहिए था, जैसा पार्टनर चाहिए था, जैसी लाइफ चाहिए थी वैसे आने वाली है, आपको बस थोड़ा ना ये डिफिकल्ट टाइम ब्रेव करना पड़ेगा, ठीक है। बट डोंट वरी बाबा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गोल्ड मिश्रा, राधे राधे, जय माता दी।
एंजल्स मैसेज फॉर यू। हेलो सोनाली, कैसे हो आप? गोल्ड मिश्रा जी, आई थिंक रिसेंटली आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी गई थी जिसका दुख आपको अभी भी हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखो बाबा कि दिस वेरी टेम्पररी। ठीक है, आपके हाथ में इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप बस वो माइंड में रखना कि आप उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, देखो, कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सुधरने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियली। ठीक है, तो पहले तो टेंशन नहीं लेना। आप टेंशन क्यों लेते हो? हम्म देखो, जो भी है ना बाबा, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, है ना। जो भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, उसको आपकी प्रॉब्लम्स मिटाना कितना इजी है ना। एक चुटकी मारो और प्रॉब्लम्स वैनिश। ठीक है, पहले तो आप टेंशन लेना बंद करो। आप अपने भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है, जैसे होता है ना कि घर में चॉकलेट रखी है, लेकिन कई बार मम्मी लोग नहीं देते हैं, ये बोल के कि नहीं बेटा पेट दुख जाएगा, खाली पेट नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, है ना। वैसे ही सोच लो कि भगवान के पास भी आपको जो भी चाहिए वो है, लेकिन अभी आप प्रिपेयर नहीं हो वो रिसीव करने के लिए, इसलिए आपके पास अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी किस्मत में है तो आपको डेफिनेटली मिले। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है पापा। और एंड हैव फेथ इन योर गॉड। ठीक है, आप जिसको भी मानते हो, जैसे भी मानते हो, उन पे भरोसा रखो। ठीक है। स्नेहाल, व्हाट सिद्धार्थ थिंकिंग अबाउट यू, हिज इंटेंशंस, क्या उसने उसके इंट्यूशन से मेरे फ्यूचर के बारे में जो बताया वो सच था, या उसे प्रिडिक्शन देना नहीं आता? ओके, लेट्स। स्नेहाल, देखो बाबा, आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, किसी का इंट्यूशन कैसा भी रहने दो। ठीक है, जब आपको कोई कुछ चीज बोलता है तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज योर गॉड्स वे ऑफ कनेक्टिंग विथ यू। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भगवान आपसे इस वे में कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, भले ही मेरे मुंह से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे मुंह में जो वर्ड्स डाल रहा है, जो मीनिंग आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल योर गॉड्स डूइंग। ठीक है, आपको जो समझाना है वो आपके गॉड समझा देते हैं। ठीक है, ये बात बाबा आप हमेशा याद रखो। एंड हेलो सोनू जी, कैसे हो? लॉन्ग टाइम। एंड वेलकम इन एज वेल फरहीन जी, आप दोनों कैसे हो? ठीक है, तो एक बात रखना, याद रखना कि जो भले ही मैसेज गलत हो सकता है, जो प्रिडिक्शन दी हो वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव था, इंटेंशन था, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो जो भी रीडिंग थी आप उसको थोड़ा एनालाइज करो, कि सोचो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये तो आपके हाथ से जाने वाला है। ठीक है, कुछ भी हो, सोचो आपके पास एक चॉकलेट है, आपने उसके बारे में एक हाँ भाई, आपने उसके बारे में पूछा कि मैम मुझे ना ये चॉकलेट के बारे में वो बोलो, कि क्या बोलते हैं, ये चॉकलेट के बारे में एक प्रिडिक्शन कर दो। मैं बोलूंगी कि नहीं, ये चॉकलेट तो खराब हो जाएगी, आपका पेट खराब कर देगी, आपको इसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, दैट कुड बी अ प्रिडिक्शन, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि आप वो मत खाओ। ठीक है,
बिकॉज पॉसिबली आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। आप भले ही वर्ड्स और प्रिडिक्शंस को एज इट इज मत लो, उसके पीछे का मीनिंग जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, वो सोच के आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी प्रिडिक्शन करेक्ट थी, बिकॉज आई डोंट नो वो क्या प्रिडिक्शन थी, आपका क्या क्वेश्चन था, वो सब ठीक है। लेकिन मुझे जो पता चला मैं वो बोल रही हूँ। हेलो हिमानी जी, कैसे हो आप? हेलो जानवी, वेलकम इन, हाउ आर यू? ओके एंजल, व्हाट एसएम थिंकिंग अबाउट योर मैरिज? क्या वो चाहता है कि मेरी और पी की मैरिज हो या किसी और से? ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं हर्ट है ये इंसान, ठीक है, आपके ये मैरिज की न्यूज़ से। आई डोंट नो ये इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप बेटर इंसान से शादी कर सकते, ठीक है। आपके पास जिसका ऑफर है, ये नहीं बोल रही कि वो गंदा इंसान है, गलत इंसान है, लेकिन उससे बेटर आपको मिल सकता है, ठीक है। इनको यही लगता है कि यार आप सेटल कर रहे हो, आप ना अच्छे इंसान हो, अच्छा बैकग्राउंड है आपका, एक ना उम्मीद है इनको कि लाइक शायद आप बेटर कर सकते हो, शायद आप किसी बेटर इंसान से शादी कर सकते हो। आगे आप देख लेना बाबा, लेकिन हाँ, इनको लगता है कि लाइक आप बेटर इंसान से शादी कर सकते हो। um PB, what's coming to you in marriage? Single looking for arranged marriage proposals, okay. PB, what religion do you belong to, if you feel like comfortable sharing? ठीक है पीवी, आप ना एक्चुअली एक डिवाइन टाइमिंग मान लो, ठीक है। आज देखो सेकंड है, कल और परसों लास्ट 2 डेज हैं गुप्त नवरात्रि के, ठीक है। आप ये 2 दिन जो हैं गौरी स्तुति जो होती है वो सुनो, ठीक है। पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सुन भी लो चलेगा, ठीक है।
ये इंटेंशन से सुनना कि माँ अभी आपको एक पार्टनर चाहिए आपका, ठीक है, और सावन भी स्टार्ट हो रहा है, तो ऑस्पिशियस टाइम है एक पार्टनर अट्रैक्ट करने का। आप सावन के फास्ट भले ही नहीं बाबा, कोई बात नहीं, सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। देखो मैं अभी अगर गौरी स्तुति गाती हूँ तो ऐसा नहीं है ना कि आप कान बंद करके बैठ जाओगे, है ना। पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माँ खुद रजस वाला होती है ना, उनका खुद पीरियड चलता है, तो माता की जो पूजा होती है ना, ऐसा लाइक सोचते नहीं है कि लाइक पीरियड चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लज्जा गौरी है उनको खुद पीरियड्स, वो सबके लिए पूजा की जाती है उनकी, ठीक है। तो जो देवी खुद जिनकी जिनकी प्रॉब्लम्स रिलेट जिनकी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए जिनकी पूजा की जाती है, वो खुद थोड़ी दूर करेंगी, है ना। तो थैंक यू जानवी। तो हाँ, आप सुनो, ठीक है, गौरी स्तुति सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज सुनना है रोज सुन सकते हो, ठीक है। देखो सावन स्टार्ट होने वाला है, एंड कई लोग 16 सोमवार सावन से ही स्टार्ट करते हैं अपने। आप भले ही फास्ट ना रखो, ठीक है। आप 16 सोमवार या मंगला गौरी के जो फास्ट वाले डेज होते हैं, यानी सावन के जो ट्यूसडेज होते हैं, ठीक है। अम, देखो पापा, गौरी स्तुति जो होती है ना, वो मन वांछित वर मिलने के लिए की जाती है, ठीक है। तो आप ये भी सुन सकते हो, गौरी स्तुति भी सुन सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आप जिससे भी रेजोनेट करते हो वो सुन लेना। एंड सावन के मंडेज एंड ट्यूसडेज भी सुनना। एंड डेफिनेटली आप अपना पार्टनर, आपका परफेक्ट मैच अट्रैक्ट कर लोगे अगस्त तक, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की बात बात सेट हो जाएगी, क्योंकि देखो वो देवशैनी एकादशी आ रही है, तो अच्छी चीजें करते नहीं है कई लोग, है ना। अम, देवशैनी एकादशी के बाद या हाँ, देवशैनी एकादशी से लेकर जो तुलसी विवाह होता है तब तक यूजुअली शादी वादी की बात फिक्स विक्स नहीं करते, लेकिन आपको पार्टनर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना प्योर माइंड से अट्रैक्ट करना, एंड आपके रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं ना। फरीन वेट कर लो बाबा, टाइम लगेगा फरीन खान। हेलो अनु जी। हम्म, हाँ मैं क्या बोल रही थी। हाँ अनु जी, आपकी रीडिंग तभी हो गई थी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही हुई थी, तो जल्दी ही मिल जाना चाहिए आपका। आई थिंक रीडिंग सेकेंड ही किया था मैंने। अम, हाँ, रिक्वायरमेंट्स की बात चल रही थी ना। नहीं पता फरीन, आप एक अंदाज़ा 15 मिनट लगा लो। पीबी जैसे बोल रही थी कि रिक्वायरमेंट्स ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे लंबा चाहिए या बॉडी शॉडी वाला लड़का चाहिए, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए कि जैसे सोचो अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, जो आपको समझ सके, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, एक अच्छा फादर बन सके, है ना। ऐसे रिक्वायरमेंट्स रखनी है। देखो फिजिकल फीचर्स का क्या है, एक ना एक दिन तो सबको बुढ़े हो जाओगे आप, झूरी वूरी आ जाएंगी, है ना। तब थोड़ी आप फिजिकल फीचर्स देखोगे, है ना। तो आपके रिक्वायरमेंट्स ऐसे होने चाहिए, ये माइंड में रख के रिक्वायरमेंट्स रखो कि ये आपके फ्यूचर बच्चों के पेरेंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अपने बच्चों के लिए कैसा फादर ढूंढना है वो सोचकर ढूंढो, ठीक है। वो सोचकर ये सब सुनो। इनफैक्ट आई विल रेकमेंड कि आप ये स्टार्ट करने से पहले, सुनना स्टार्ट करने से पहले पहले एक पेपर लो, उसमें सब चीज़ लिख लो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए,
ठीक है। फिर आप सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपको भी वो मैनिफेस्ट करने में इजी रहेगा, ठीक है। आह, श्रावणी पी, आपके फ्यूचर हस्बैंड का प्रोफेशन क्या होगा, एंड इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। सहज सुंदर सा था सुजान तेरा। ठीक है। पीबी, नहीं पीबी नहीं, श्रावणी, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपके फ्यूचर हस्बैंड का प्रोफेशन क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे उनकी कमाई अच्छी ही होगी, ठीक है। और ऐसा करियर है कि ऐसा लगता है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है, ठीक है। तो एक ऐसा करियर है कि जिसमें उनकी कमाई भी हो रही है, और कहीं ना ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपके इन लॉज आप कैसे ट्रीट करेंगे वो तो देखो, इन लॉज हमेशा जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं ना। कभी कभार किसी के इक्के दुक्के इन लॉज अच्छे होते हैं। आप दोनों, आपको और इनके इन लॉज को एडजस्ट कर, लाइक आपको और आपके इन लॉज को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट डोंट वरी, लाइक थोड़ा टाइम के बाद ना सब कुछ सेटल हो जाए। सोनाली ठाकुर, सौरभ's current feelings towards you, डॉक्टर हो सकता है। क्योंकि देखो, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं श्रावणी, या तो खुद का क्लिनिक संभालते हैं, या खुद का कुछ बिजनेस करते हैं, या जैसे ये एनिमल्स के शेल्टर हो सकते हैं वो संभालते हो, कुछ ऐसे ही करते हैं। क्योंकि देखो कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, एंड वन कार्ड रीडिंग है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आता है ना। एनीवे, सोनाली ठाकुर, सौरभ्स करंट फीलिंग्स, ठीक है। बहुत दुखी हैं, ठीक है। उनका लाइफ पूरा ऊपर नीचे हो चुका है, तो लाइक दुख तो बनता है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ में मैं क्या करूं, है ना। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं चल रहा मेरा, वो नहीं चल रहा अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी है लाइफ को लेकर। हेलो मनोकामना, हाउ आर यू। ओके अनु जी, थैंक यू सर। हाँ, क्या बोल रही थी मैं। दुखी हैं, ठीक है। इनकी लाइफ बहुत क्योटिक हो गई है, कहीं ना कहीं इनको धोखा भी मिला है, तो बहुत दुखी हैं। ये होता है ना कि ना लाइफ में ये अच्छा है ना वो अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि गारंटी इनको डिप्रेशन हो गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, गिवन हाउ सैड ही इज।
अम, फरहीन फरहीन सिद्दीकी। अ, मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके। शादी का डेफिनेटली इनका प्लान है, ठीक है, लेकिन डिले कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें सेट नहीं हुई हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, या तो फाइनेंशियली नहीं सेट हुई है, या इनको लगता है कि आप एक दूसरे को उतना अच्छे से नहीं जानते हो, या फैमिली अभी रेडी नहीं है आप दोनों की ये सब चीज़ के लिए। लाइक शादी का तो डेफिनेटली सोच रखे हैं, ये बस करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाएं, ठीक है। और विल द बोथ ऑफ यू मीट इन द कमिंग फ्यूचर? यस, डेफिनेटली, हाँ। आप लोग मिलने वाले हो, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इनको भी जल्दी है कि जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल हो, फिर आप दोनों की शादी हो सकती है ट्रिप्स। हिमानी। नहीं, सोनाली जी, आपका रीडिंग मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लोगे ना पापा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हिमानी जी, आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि जब सब सही लगने लगता है तब भी कुछ नहीं हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है? ठीक है, लेट्स चेक हिमानी जी। अम, कोई कर्स नहीं है, ठीक है। ये एक, क्या होता है ना, एक लेसन है आपका। सोच लो, आपका, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चैप्टर में वीक हो, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा? हेलो सुमी, आई एम गुड, हाउ आर यू? टीचर आपको बार बार वही चैप्टर पढ़ाएगा ना, वही चीज समझाएगा ना, एक वे में नहीं समझ रहे हो तो दूसरे वे में समझाएगा ना। हाय क्राई बेबी, म्याऊ। वेलकम इन। I'm glad you stopped by. Hey, hi, meow meow. I hope you're doing well. Thank you so much for coming in and saying hello. एनीवेज, हाँ, तो आप वो लेसन सीख नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स को ज़बरदस्ती बार 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 आपको वही सिचुएशंस में रख कर, सुमी, आई एम नॉट श्योर लव, आई डोंट थिंक यू left the question before, have you? I think you've just walked in, right? It'll take some time. Hello, Dua. How are you? Oh, and you are my favorite streamer. See you later. Sure, Dua. Okay, Janvi. Um, Janvi ji, I see two of your questions. मैं कौन सा वाला करूँ? What will your spouse's career be? या you're in no contact situation, everything was going well, he abruptly blocked you and all of that. हाँ हिमानी, अभी हुआ था। लाइक अभी आपका किया मैंने, एंड दूसरे इंसान का क्वेश्चन पढ़ा है। ओके जानवी जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तब तक आई एम डूइंग सोनू जीज, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन जनरल।
ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है। आई थिंक सोनू जी आप बहुत दिन से घूमे नहीं हो कहीं, तो कहीं डेफिनेटली घूमने जा रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो। ठीक है। अम, बहुत इमोशनली ना आप बहुत खुश फील करोगे। ठीक है, बहुत टाइम बाद ना आपको फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाय मैं इतनी खुश न जाने कब थी लास्ट टाइम। ठीक है, आप अकेले में आप रियलाइज करोगे कि खुश रहने के लिए ना आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत थी, खुद के सपोर्ट की ज़रूरत थी, खुद की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली आपके आने वाला जो टाइम है आप बहुत खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। एंड बहुत सारी जगह ना एक्सप्लोर भी करोगे आप। यू नेवर नो सोनू जी, आई थिंक जॉब एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल मेक यू गो, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है ट्रैवल कि आप यू नो अगर बाहर घूमने नहीं जा रहे हो लाइक फिजिकली, कि लाइक दूसरा स्टेट नहीं जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप खुद के स्टेट में तो घूमोगे ही। ठीक है। दुआ आपका जब टर्न आएगा ना बाबा, आई विल कॉल यू आउट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, बार बार पोस्ट करोगे ना आप खुद कंफ्यूज होगे, मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे, है ना। um, फरीन फरीन आपने अपना क्वेश्चन डिलीट किया है क्या? वही तो सोचूं मैं। ठीक है, क्रश अजहर आपसे पहली बार रिलीजियस प्लेस का तो नहीं पता सोनू जी, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करोगे, जहाँ भी जाओगे ना आप खुश रहोगे, जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप नया खाना वाना भी नया खाना ट्राई कर रहे हो, नए आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है। आपसे पहली बार बात करके कैसा फील कर रहा है? ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। ठीक है, एक कंप्लीशन फील हो रहा है कि हाँ जो ना अभी तक जो मिला नहीं था, या अम, कोई लॉयल इंसान नहीं मिल रहा था, या सब ऐसे कहीं ना कहीं धोखेबाजी मिल रहे थे, है ना। आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि हाँ शायद ना कोई लॉयल इंसान हाथ लगा है इस बार। ठीक है, तो एक हाँ ऐसा लग रहा है ना कि शायद मेरी खोज यहाँ खत्म होती है। इनकी मेन फीलिंग वही है। मी लेविन, हाउ इज हेच व्यूइंग यू? यस फरीन जी, how is H viewing this connection? Me trip no, me 1111. Okay. Um very happy. Okay, this person is happy that you finally started to communicate, and a lot of things are working out for them, but they feel like maybe they'll have to walk out of something toxic. Like someone saying something to them and they feel like, I'm not being valued here, maybe I shouldn't be communicating like this or something. Okay, so there's like a mixed emotion. Janvi ji, are you here? ठीक है, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ही कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में। ठीक है। व्हाट इज इन योर पर्सन्स माइंड? ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि जो सपोर्ट देने वाला था अब वही चले गया। ठीक है, आप ऐसा था ना कि फाइनली लाइफ में वो कहीं जा रहे थे,
एंड कोई ऐसा लगा कि जो सिर्फ उनके लुक्स से या पैसों के लालच से उनके साथ नहीं है, कोई जेन्युइनली उनको पसंद करता है। एंड ये सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट हो गया एंड लाइक वो बात करना बंद कर दिया, तो उनको लगता है कि उनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई। तो उस बात का दुख है। अह, मैं गला जाने वाला है थोड़े दिनों में। मनोकामना, will you and Navneet be able to move in Delhi after 2 months, or whenever we're planning for our career, will it be successful? Let's see. मनोकामना जी, yes, definitely it'll be successful, ठीक है। I think financially कहीं फरीन मैंने आपका कर दिया बाबा। आई थिंक फाइनेंशियली आपको कहीं से हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मूव, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक आप लोग साथ में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो, है ना। एक दूसरे के ऊपर का बोझ भी कम कर सकते हो, थोड़ा ना बैलेंस आ जाएगा ये कनेक्शन में, ठीक है। फरीन बाबा देखो, 1 कार्ड रीडिंग है, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप खरीद सकते हो एक रीडिंग, या आप नेक्स्ट स्ट्रीम भी आ सकते हो। सुमी आई एम नॉट श्योर बाबा। हाँ देखो, आपका टर्न आ गया। व्हाट्स योर क्वेश्चन? दुआ, आप और सुमी आसपास ही आए थे ना, तो अभी सुमी का टर्न है, फिर आपका, ठीक है। हेलो समरीन, हाउ आर यू? वेलकम इन। Basil की intentions towards the reunion, ठीक है। आई डोंट थिंक इनका रियूनियन का मन है सुमी, ठीक है। देखो, आप शायद मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे, और ये इंसान ना थोड़ा कैजुअली रखना चाहता था, जैसे आप दोनों दोस्त हो, एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, और इसको यही लगता था कि थोड़ा थैंक यू सुमी। इसको ऐसा लगता था ना कि थोड़ा फिजिकल हो गए, थोड़ा एंजॉय कर लिए, तो मेरा काम हो गया टाइप्स। कंग्रेचुलेशंस मनोकामना। आई होप कि माता से प्रे करती हूँ मैं कि आपका शादी अच्छे से हो जाए, एंड आपके करियर्स भी बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएं। तो देखो, कार्ड्स भी तो बोल रहे थे ना कि सक्सेसफुल है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू स्टेप यू आर टेकिंग, है ना। भगवान आप दोनों की रक्षा करे, एंड आपका ये जर्नी जितना कंफर्टेबल बना सके उतना कंफर्टेबल बनाए, ठीक है। बैक टू यू सुमी। हाँ, जैसे बोल रही थी ना कि ये बहुत ना कैजुअल रहना चाहता था, लाइक कभी कभार फिजिकल हो गए, या ऐसी टाइम पास किए। आप थोड़ा डीप कनेक्शन चाहते थे, है ना, आप थोड़ा डीप कमिटमेंट चाहते थे, वो ये देने के लिए रेडी नहीं था, और अभी भी नहीं है। तो माय एडवाइस फ्रॉम योर गाइड्स इज कि आप इसको छोड़कर मूव ऑन कर लो, ठीक है। आपके लिए जो पर्सन बना है, जो आपको वो कमिटमेंट देगा, जो आपको वो प्यार देगा, वो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। ये इंसान से आप उम्मीद मत रखो। देखो बाबा, हम ना हम एक कूड़ा उठाने वाले से ये उम्मीद नहीं रख सकते ना कि वो कूड़ा नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। सोचो कि एक वो है, देखो क्या बोलते हैं, ये होता है ना जो
बुच्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बुच्चर होता है ना, बुच्चर से ये नहीं उम्मीद रख सकते ना कि वो बहुत डेलिकेट रखेगा चीजों को, है ना? उसका नेचर ही वही है, उसके नेचर में है ही नहीं कि वो कुछ ऐसे प्यार से संभाल कर रख पाए, है ना? तो आपका दिल ना बहुत डेलिकेट है, आप बहुत वैल्यूबल हो, तो आप भी डिजर्व करते हो कि कोई आपको ऐसे प्यार से संभाल कर देख कर रखे, है ना? तो जो नहीं रख रहा है उससे दूर तो दूर ही रहना है ना। मैं ना कई बार बोल चुकी हूँ अपने स्ट्रीम में, ठीक है, जब भगवान ने, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, आपकी किस्मत में सोना लिखा है तो आप पीतल के लिए क्यों सेटल हो रहे हो, है ना? जब आपके लाइफ में गोल्ड लिखा है, आपकी किस्मत में गोल्ड लिखा है कि यू विल रिसीव समवन हु इज लाइक गोल्ड, देन व्हाई डू यू वांट टू सेटल फॉर समवन हु इज लाइक आयरन, ब्रास, है ना? ब्रास का नो डाउट गोल्ड जैसा ही लगता है कई बार, है ना? लेकिन गोल्ड तो गोल्ड होता है ना बाबा। अब ब्रास बेचने जाओ वो किलो के रेट से लेगा, है ना? ठीक है। दुआ। नजीम का नो कांटेक्ट फजूल का एटीट्यूड दिखा रहा है ये। पहले तो ना एक चीज मेरी कंप्लेन है ये मेल पॉपुलेशन से। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को पहले प्यार में फंसाते हो, क्या मिलता है? जब उनको मेंटेन करने नहीं आता तो क्यों फंसाते हो अननेसेसरीली? बट लेट्स सी, क्या वो मैसेज करेगा? नहीं, मुझे ना दुआ आपके लिए ना एक वो मीम आ रहा है, याद है शिनचैन? अगर आप देखते हो तो उसमें एक पार्ट आता है कि मैं नाजुक कली हूँ, मुझे संभाल के, कुछ ऐसी है ना कि वो होता है ना कि अन्नू जी देखो, पनिशमेंट्स तो इनकी डेफिनेटली मिलती हैं, ठीक है, इनका कर्म जो होता है ना रियल लाइफ में भी मिलता है। जो अपना ये भौतिक लोग जो होता है, मृत्यु लोग जो बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें भी इसका पनिशमेंट मिलता है, और जो नर्क होता है ना उसमें भी मिलता है, ठीक है। इनका पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलता है। देखो जो, जैसे हमारे यहाँ के दोनों बड़े बड़े युद्ध हुए थे, दोनों महाभारत और रामायण, दोनों तो, दोनों का बेस तो वही था ना कि एक नारी शक्ति का अपमान हुआ था, है ना? जबरदस्ती की गई थी। तो पनिशमेंट्स तो इनके डेफिनेटली मिलते हैं। बस हम ना देखते नहीं है इनको। आई थिंक डेफिनेटली लाइक भगवान तो उनका पनिशमेंट देंगे ही, बट हमको भी एज अ सोसाइटी शुड स्टार्ट पनिशिंग दीज पीपल, है ना? लाइक कई लोग तो इन लोग भगवान को मानते ही नहीं है। लाइक रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी, जो ये चाइल्ड विक्टिम्स होते हैं उनका, एंड उनका कितना दिल दहलाने वाला था। एक छोटी सी बच्ची के साथ ये गलत काम कर रहे थे, एंड दे वर रीडिंग बाइबल के वर्सेस कि लाइक वो गलत काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं बच्ची के साथ, और एक इंसान ना खड़े होके वो पढ़ रहा है जोर जोर से, उसको सुना रहा है कि उसको जब भी वो भगवान की तरफ जाना चाहे उसको वही दिमाग में आएगा कि भगवान के होते हुए भी मेरे साथ ऐसा हुआ। कई बार मुझे भी लगता है कि उस वो बेचारी का क्या गलती है ना, छोटी सी बच्ची है, उसको खुद अक्ल नहीं है अभी, है ना? बट कुछ चीजें ना हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर हैं, जैसे
जैसे देखो भगवान की खुद की वाइफ थी फिर भी रावण लेके चले गया था ना। तो भगवान डेफिनेटली देखते हैं, है ना। हमारे कर्म भले ही ना रोकते हो लेकिन उसका पनिशमेंट जरूर देते हैं। आपको क्या लगता है वो इंसान जो कर रहा था वो खुश रह पाएगा लाइफ में? नहीं रह पाएगा। अभी भले ही वो थोड़े टाइम के लिए ऐसा फील करे कि कोई टच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे वो तो भगवान है ना, वो तो गॉड है ना। उसको ऐसा पटकते हैं ना, लाइक नॉट ओनली इन दिस लाइफ, उसका सोल भी पनिशमेंट फेस करता है इसका, है ना। जो नर्क होता है, जो हेल होता है, या क्या बोलते हैं उसको, जानूम नहीं, क्या कुछ तो भी बोलते हैं। तो हाँ देखो इनके पनिशमेंट्स बिल्कुल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो एक माता लोग भी क्या होते हैं, उनका भी एक वो हो जाता है कि वो वचनबद्ध हो जाते हैं। गॉड भी एक पॉइंट पे ना अपने प्रोमिसेस से वो हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। कि देखो हर भगवान अगर आते रहे, कुछ भी गलत हुआ, वो इंटरवीन करते रहे तो बैलेंस खराब हो जाता है ना। जो अच्छाई और बुराई बैलेंस में रहना जरूरी है ताकि ये फंक्शन करे लाइफ, वो खराब हो जाता है। विच इज ऑब्वियसली क्या पॉइंट है। अगर इतना बुरा हो रहा है तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये क्या डिजर्व करते हैं, है ना। लेकिन खैर भगवान की प्लान है, हम कुछ कर नहीं सकते उस पे। लेकिन ये नहीं है कि माता देख नहीं रही है, माता सब देख रही है। इनफैक्ट मैं जो कर रही हूँ वो भी देख रही है। अगर मैं रीडिंग्स के नाम पे आप लोगों को अगर ठगना स्टार्ट कर दूं, कुछ भी कर लूं, है ना, तो माता विल सी दैट ऑल्सो, है ना। आई विल बी पनिश्ड फॉर इट क्योंकि मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैंने लाइफ लॉन्ग हजार अच्छी चीजें की और एक भी बुरी चीज की ना, तो वो एक बुरी चीज को भी मुझे फेस करना पड़े। तो भले ही गलत काम नहीं रोक सकते गॉड, लेकिन उसका पनिशमेंट डेफिनेटली देंगे। तो श्योर केटी, बैक टू यू दुआ। टाइम पास कर रहा है वो, ठीक है। मैसेज नहीं करेगा, लेकिन बात ये है ना कि ये कॉन्फिडेंट है कि लाइक आज मैसेज नहीं करेगा, कल मैसेज नहीं करेगा, परसों किया तो आप इंस्टेंट रिप्लाई करोगे इसको, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस में ना ये भी थोड़ा ऐसे हवा में उड़ रहा है पंछी की तरह। सही बात है। आई मीन देखो भगवान की प्लान है। मैं जब ब्रह्मा जी भगवान की माया नहीं समझ पाए, हम तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए इंसान है ना, हम कहाँ समझेंगे। सही बात है, मुझे भी लगता है। देखो इंस्टेंट पनिशमेंट आई थिंक इसलिए नहीं मिलता होगा कि कहीं ना कहीं गॉड भी, यूनिवर्स भी वेट करता है कि लाइक इनका देखते हैं कि ये सेटल कर रहे हैं, हम एज अ सोसाइटी ये जो गलत हुआ है उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं क्या, हमको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्योंकि देखो जो गलत काम कर रहा है, जो देख रहा है और जो बढ़ावा दे रहा है, थ्री ऑफ देम आर इक्वली पनिशेबल ना। तो आई थिंक यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप मानते हो, वो भी अब हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि देखो तुम्हारी गलती है, तुमने ये होने दिया, तो तुम सुधार रहे हो या मैं देखूं टाइप्स। आई थिंक इसलिए डिले होता होगा, बट आई डोंट नो। मैंने उतना पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं किया है, करनी चाहिए मुझे तो। लेकिन हाँ, वो तो है बाबा। देखो लाइफ इज ऑलवेज वैल्यूएबल। ये ड्रामों में देखो एंड ऑफ द डे विक्टिम ही सहता है, एंड इट्स ऑब्वियसली नॉट फेयर। मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन देखो खुद को ऐसे ही समझाना पड़ता है। ओके, लेट्स सी केटी।
Hmm. Okay, let's see. Hmm. Katie? I don't know how to say this, love, but I think there, Samreen, आपका क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्या बाबा? हे भगवान, I'm so sorry, Samreen. Uh, I think, hmm. देखो बाबा, समरीन आपको स्किप नहीं किया है मैंने। ये जो केटी हैं, जो जिनका रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, उन्होंने पेड रीडिंग की ली है, ठीक है? तो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है। मैं इनका रीडिंग करने के बाद आपका करूंगी, डोंट वरी, लेकिन आपका कर दूंगी मैं, ठीक है? Katie, I think there's definitely someone's been filling his ears that, he can do so much better. And I think his mother is also provoking him to sort of cheat on you. Okay, there's that energy of cheating and being unfaithful. Okay, so he may have gone behind your back, or at least, even though he didn't cheat, he could have indulged in that thought. Like, he could have been like, oh, you know what? That's possible. Um, he says a lot of things, like when, uh, like he said, it's forever and all those sweet promises he made. His words don't hold value anymore. Bye, Anuji. Good night. ठीक है? He, I've received the Hermit in reverse, so it's definitely not something he did alone. You know, there's definitely someone else involved, right? Um, there could be cheating involved, and he feels too guilty to, be open about it. So he's acting like, things are not working out between the two of you and all of that. Katie, in reality, he just loves being a hoe. He loves going around sleeping with people and acting like, everything's fine and things like that. And now that he's tied in like a marriage, this doesn't feel like liberating to him. It feels like a cage, that he cannot go around, he cannot explore, and he's been tied down to something. See, because love in reality, in its very true nature, is very liberating, right? It opens up a lot of doors for us, it opens our heart up to everything, right? And this guy is like, you know what? Now that I'm married, I'm not allowed to cheat. That's where his mind is going. Are you sure? Like, not physically, but he could have, indulged in, like, maybe he's not, sleeping around physically, but he's, everywhere on the Instagram. Maybe he's like in OnlyFans and things like that, if you would like catch my drift. So like, even though physically he's not having a relationship with someone, he may as well have one on over the social media. Somewhere he feels like, he's getting leftovers of other men, and he wants something quote unquote fresh. Yes, Kitty, definitely. He's not doing this on his own accords. Hello, user 1761. The tarot readings are free, but if you want your reading to be prioritized, or if you want more information, you can definitely pay for it.
हेलो संजू जी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वेलकम इन। या बैक टू यू केटी। He's just like, a toddler. He's like a toddler being asked to put on pants. He's just going around throwing tantrums and everything. Hmm. Because he likes the quote unquote freedom. He likes keeping his options open. And, definitely someone's filled his ears about how yeah, right. And if he did want something what's best for him and his family, he'd keep his, children away from his mother. We've discussed that before. He's just making excuses, Katie. He's just trying to act like, oh, I'm prioritizing my healing and all of that. But in reality, he just wants to, be a douchebag without being a douchebag. Like, he wants to be a total mean person, but he also wants himself to feel like, oh, he's a saint. Oh, he's prioritizing his health and his mental well-being in the name of whatever clownery he's doing. श्योर यूजर बता सकती हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बाबा, ठीक है? आई गो इन एन ऑर्डर, ठीक है? जिस ऑर्डर से मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं वही ऑर्डर से आंसर करती हूँ। अभी पेड रीडिंग चल रही है, इसके बाद फ्री क्यू से फिर से स्टार्ट करूँगी। क्यू में ये रीडिंग के बाद समरीन है। समरीन के बाद वी हैव संजू एंड देन यू, ठीक है? uh, hmm. Like, he'll definitely say something, half-heartedly, okay? But both of us know you deserve better, you deserve better than half-hearted apologies, you deserve better than just him being, this half-heartedly indulged. You deserve someone who is completely clear about what they want from this connection and treats you with that respect. He will, but it'll require a lot of weight. Are you sure you want to do that, bestie? Like, because hear me out, if it's like the longer you stay around this guy, you're just downgrading your own standards. Like, the more you're around him, the more are you letting everyone know that it's okay to, disrespect you in such a way. Like, you're talking about how you're being treated terribly, like you're some maid, and you still want to stick around that person.
I know, love. And that shows how genuine your feelings were. He will later on in life, but not right now. Like, he will right now, but it'll be very half-hearted, you know, very, he's saying it just for the sake of it, sort of, an apology. Yeah, like, to sort of make it look like he still cares, and like he's still trying to be the bigger person, the better guy. You're not accepting his rejection. You've been disrespected and you're setting a boundary for yourself. There's a difference. It is disrespectful because, he just treats you as he wishes. Like one day he wants you, one day he doesn't. You're not some restaurant he can just walk in and out of. And once you make that commitment, it's a long-term commitment. It's not like a game that, one day he wants to be married, the other day he doesn't. It doesn't work like that. He's just trying to manipulate you, he's trying to change the narrative here. He's making himself the victim. No, you're not. And what is he doing? Is he not putting his guilt on you? That's straight up manipulation and narcissistic behavior. He's not making a decision. A decision is made where both the parties agree with it. He just does as he pleases. And then he manipulates you into accepting what he wants you to accept.
Samreen, you'll meet your future spouse when you're confident in yourself. ठीक है बाबा? आप जब खुद के साथ ना कॉन्फिडेंट रहोगे, when you realize कि मैं सुंदर हूँ, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं एक अच्छा स्पाउस डिजर्व करती हूँ, ठीक है? तब मिलोगे आप ऐसे इंसान से। ये ना शायद आप कोई just give me a minute, Katie. I think the free queue's been waiting for a while. ठीक है, कोई सोच लो एक कंपटीशन हो गया, ठीक है, जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस करने दे रहे हो पब्लिकली, ऐसी जगह पे आप मिलोगे, ठीक है? और ये आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ओके संजू, सुजित फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, ठीक है? वो वो कैसे है ना कि थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कैसी लड़कियां हैं आसपास, उनको कैसी पार्टनर मिल सकती है। उस हिसाब से ना वो सोचेंगे कि लाइक आपके पास वापस आना है, नहीं आना है। ठीक है, यूजर 1761, आपकी करियर के बारे में बात की जाए तो आप थोड़ा पेशेंट रहो, ठीक है? आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है, कैसा करना है। आई डो संजू, वही तो बोल रही हूँ कि लाइक वो चाहते हैं कि आप वेट करो उनके लिए, ताकि वो दूसरी तरफ देख सकें कि और बेटर लड़कियां हैं क्या, क्या उनसे कनेक्शन में आएंगी, क्या वो लड़कियां नहीं आएंगी तो वो आपके पास आ जाएंगे टाइप्स। यूज ही हुआ ना। एनीवेज यूजर 1761, आपको थोड़ा वेट करने को बोला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आपको ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। कोई आपके को गाइड करने आएगा। एग्जैक्टली संजू जी, एग्जैक्टली कोई आपको गाइड करने आएगा इन योर करियर, ठीक है? कोई मेंटोर आएगा, कोई बड़ा इंसान, या तो आपके पुराने टीचर्स हो सकते हैं, या आप यूट्यूब पे किसी को देख सकते हो जो सिमिलर करियर्स पे गाइडेंस देते हों, ठीक है? तो आपको कोई गाइड करने बहुत जल्दी आ रहा है आपके लाइफ में, आप थोड़ा पेशेंट रहो और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, ठीक है बाबा? बैक टू यू केटी, what to do and how do you live through everything. um you just stay strong, okay, because you did your best, okay? This wasn't a failure on your end. You literally did everything right and you still got treated the way you did, okay? So stand your ground, okay? Be your supporter unconditionally. Don't think that uh, putting your point here and there is going to make you selfish. I don't know what to tell you, Katie. It's so terribly saddening that you're being made to feel this way.
You're not asking him to give you like the world, right? You're just asking for basic human decency, and you shouldn't be made to feel bad about it. But advice from your guides, you deserve so much better. Okay, be patient. Hello, Nimra, welcome in. How are you? आप कैसे हो? Okay, universe will make sure that you're given justice in this situation. I'm being drawn to share this quote with you. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Remember that, okay? And every time you feel overwhelmed, remember that it'll be okay. Absolutely, Katie, you will get justice. Something terrible's happened with you, and universe is not going to sit around and watch. They will face the repercussions of what they've done. Oh my God. I'm so sorry. How did that happen? Are you okay? Don't feel like that, okay? Universe is very unbiased. So if you're going to face punishments and all of that, so will they, okay? And they're going to get it much worse because they've done something truly terrible. And that sounds so painful. It is unfair. They did. It is terrible, Katie. Not only did they manipulate you, he did everything he wanted to. Both of you got married when he wanted to. Both of you broke up when he wanted to. Both of you are splitting when he wanted to. You were living how he wanted you to. Exactly. He's treating it like it's his personal game. Nimra, I'm in the middle of a paid reading. I'll do your reading once I'm done with that. Okay? What your statement about this? It is true.
I regret him being in our lives, I'll be honest. I don't regret things often, but I do regret him being in our lives. He's nothing but a little boy. A little boy with like two brain cells and um, a lot of alpha male content he's consumed, like from Andrew Tate and God knows where. I don't see him being mature, not one bit. I don't think anyone's taught him how to be mature. Ever since he was an egg, he's been like this. Two brain cells, that's all he's got. I know, best. I know, Katie, I know. It's terrible. And like, I hate him for you, you know. You don't have to hate him. I hate him enough for the both of us. What a piece of work, I'll be honest. Like, how can you sleep at night treating someone like that? What a blunder by humanity. Nimra, are you still here? Alexander's feelings for you. He's content, okay? Um, he's waiting for the right moment to confess something. Um, he's recently gone through something terrible, so everything sort of went out of sorts for him. So right now his physical world is a mess. So for the both of you to have a happy ending, he wants, you know, he's waiting for the right moment. I know, right? I know, Katie. What a piece of work. He's like a toddler with two brain cells. You didn't. You were literally the nicest thing that happened to him. Like, you've been so patient, you've been so kind. And I've said this repeatedly. Like, you have the patience of a saint, you know. I don't have so much grace in me as a reader.
was not Kitty. Like, don't take someone else's blame, you know. You didn't do anything wrong. If you did something wrong, I would have told you. I'm not allowed to lie. He just wants to be a dramatic diva, you know. It's giving like, have you seen those memes? If you're gay, just go date men, don't bother the women here, or something like that. Like, there was also this reel that was like, my favorite marketing gimmick is men labeling women as the more emotional gender by saying anger is not an emotion. Because, like, have you seen men? They're dramatic pieces of work. Like, I'm not saying not all men, but most of them are. They're like fragile little divas that won't admit they are. Nah, he's never happy, Katie. Like, anyone who knows how to be happy would have been happy even now, you know, who would, they would have been super happy with you, not just be like a spoiled child. Hello, Queen. Welcome in. Sarthak's current feelings for Prerna. How are you? आई थिंक कहीं ना कहीं इनको लगा था कि आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहोगे। फिलहाल इनकी लाइफ में यू नो ही इज डीलिंग विद अ लॉट, बहुत प्रेशर है इन पे करियर का। करियर का प्रेशर है, लाइक अ लॉट ऑफ करियर प्रेशर एंड लाइक फैमिली प्रेशर, यू नो, लाइक मिडिल क्लास कैसे होते हैं कि लाइक फैमिली का पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना है, कहीं ना कहीं ये वैसा फील कर रहे हैं कि लाइक फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन इनको सुधारना है, इसलिए अभी इनके पास लव वो सब के लिए टाइम नहीं है। तो लाइक कहीं ना कहीं आपके लिए भी फीलिंग्स फिलहाल नहीं है। um yeah, he will, but it'll take some time, Katie. It will take some time. Thank you. Because Katie, if he had that um, mental strength of recognizing where he's wrong, both of you wouldn't be where you are, right?
Um, user Nimra, I've answered your question a while ago. ठीक है? And user 1761, I've answered your question as well. पापा आप थोड़ा रिवाइंड कर लोगे तो आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा. Hmm. Maybe you don't see it. Like, I'm not justifying his incompetence, but maybe he did realize it. Maybe he's just not talking about it. Because you know how the male ego is, they don't like admitting when they're wrong. What a terrible thing to say. Oh my god. Katie, that's red flag after red flag. Kitty, like, throw that man out of your life. Like he belongs in the garbage or something. I don't know. But, like, he needs to be out of your life. Because anyone who talks like that shouldn't be around your kids. Let's see. Jessica, what's coming towards you next in love? You're single right now. Okay. Um, you need to be more open. Okay. I know, Katie, I know. Be more open, stop hiding yourself, okay? Because love doesn't just knock on your door, right? You have to go see the world for love to see you, right? Be more open. Your person is on his way. He is probably a foreigner. I'm saying he, but take it how it resonates with you, with like whatever you feel attracted to. Yeah, they're on their way. They're probably traveling right now. That's why you haven't met them yet, because they're about to, come from like a different country. But yeah, you're about to meet them soon. Hello, Cora. Welcome in. How are you? Uh, Nimra, are you like listening to me? I did answer your question, Baba. If you want, I can repeat your reading, but it's not that I didn't see your question.
Nimra, right now, Alexander wants you to wait for him because he has a lot of things going on in his life and he doesn't think he's emotionally prepared for a relationship. Okay? Cora, back to you. What is Donald's next step towards you? Let's check that out. Um, okay. Wants to celebrate something with you, okay, maybe go out. If you feel uncomfortable with just him, he may also invite your friends, so it feels more like a public gathering rather than something very private. But yes, does want to spend some time with you, get to know you more on the emotional level. I see. He may try again by, sort of um, getting into your like friendship zone via your friends or something. But yeah, I don't think he's ready to commit yet because he feels like he doesn't know you enough to be in a relationship. I mean, I don't know what that man is thinking, but yeah, that's what he's thinking. Like, I don't know why he's thinking like that. Like, obviously you get to know people better when you're in a relationship with them, right? But men and their brain cells. I mean, not all men, but enough men. Exactly, Katie, because like every time you speak, you're bringing up genuine, actual, real points, and he doesn't want to acknowledge them. He's like, no, I'm not wrong. Oh my God, I'm right. I'm God. I can never be wrong. Everyone else is wrong. The world is wrong. Doesn't like being called out. No, Cora, I just, the last sentence, the last part was Katie's, but before that, it was yours. Cora, those are excuses, right? Have you not been around terrible people? You have, right? But but you're still willing to give people chance, right? Those are just excuses, these clowns come up with. I don't know. Like, I'm so tired of these people. Like, they just come up with such creative excuses. Like, have you not been in a terrible relationship, Cora? But you still give a chance to men, right? Like, we constantly hear about all these crimes against women and all these nonsense these men do. And, we're still willing to, entertain these partners, as potential husbands, fathers, or whatever. When we can get over it, they can too. You don't have to be in a terrible relationship to know that, right? Like constantly we are hearing about, men installing cameras in bathrooms and, stalking and all the nonsense they do, all the criminal activities. When it comes to men, they're very quick to say not all men. Possibly. Hopefully he, realizes that, but
It'll definitely take some time. Because another thing about men is they have egos. I mean, I'm not a man hater here. Now I have a brother, I have fathers, amazing men. But you know, some of them are really out there sinking, sinking the ship. Have you seen what genuinely good men are, right? My sister's husband, my father, my uncle, my brother, amazing men. But I've also seen clowns. Sure, Kitty, let's check. Um, okay, Katie, here's two like choices. Okay, here are two options. Um, one thing you can say is that, you know, good for you, and just be like, and like not say anything other than that. Like, I'm glad you figured this out, like, be the bigger person. Or the second option is to not say anything, like, just give him a look like, yeah, right, really. Is that what we're pretending this is? And just, you know, walk away. Both options, more damage than your words could ever do. Be the bigger person, no matter how difficult it is. But in the long run, it definitely does more emotional damage. Like, I've seen it. I've seen it. Uh, Sanya, only one question is free. I will be streaming again tomorrow. तो like अगर आपको चाहिए तो आप कल आके ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको आज ही चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा बाबा, ठीक है? But like that's the bare minimum, Katie. Like, you know, I would do that with strangers out of courtesy.
No, love, of course not. It's it's a lot more than just, you getting detached. It's a lot of emotional trauma, a lot of loneliness, a lot of I'm all alone now sort of feelings, if you catch my drift. There's a lot to the justice he'll face than just, you being detached. But Katie, it's just going to fall in deaf ears, right? When you like tell them how genuinely angry and betrayed you feel, they're just going to turn it around on you and be like, no, you're overreacting. It's not that deep and things like that. You're better off not dealing with those dismissive conversations. How? How is that your current? You were married to that guy, that's your home. That was technically your home. And asking her to leave was you setting a boundary. He was the unsupportive spouse, he's the problem here, not you. Nuh-uh, don't take his blame.
Katie, not everyone has a good relationship with the mother-in-law. Like, oftentimes the mother-in-law is the problem. Don't take this on you. You literally did everything you could. Well, you just have to trust in the divine. Like, sometimes we don't get things. It's always better to just hope that it's for the greater good. Because you have to realize that you, as an individual, are not just experiencing things from your physical body, right? You're also experiencing things on the behalf of your soul. Thank you as well, Katie, for trusting me with your time, space, and energy. I hope the reading resonated, and I hope I'm given the honor to read for you again. Is there anyone else in the stream I've missed? I haven't answered your question. Anything like that, let me know.
Firefly, welcome in. How are you? I didn't see you there. Hello as well, Kevin. Hi, welcome in. How's everyone doing? Giri, you have to stop, taking his words with value, take his words with the value of a grain of salt. He's not really, he's just saying all of this to make himself look good in his own eyes. Um, okay, as for you, Firefly, Scorpio's thoughts for you. Okay, you feel like you're the moon. Okay, somehow he can look at you, but still you feel a little far away from him. He's also trying to understand what he feels, and he's trying to understand if what he feels is truly genuine or is it just something he's, feeling out of hormones, if you like catch my drift. Okay, let's see, Kevin. Kevin, firstly, in the interview, um, डेफिनेटली ऐसे बताना है कि यू आर अ वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, कि तुम्हारे बिना ये कंपनी में कुछ काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। बेस्ट वे टू डू दैट इज कंपनी की चाबी चुरा लो, ठीक है। तो सुबह देखो खोलना पड़ता है कंपनी, तो लाइक ऑब्वियसली चाबी की जरूरत पड़ेगी, सो दे विल नीड यू, तो डेफिनेटली यू विल गेट हायर्ड। Firefly, I didn't know you knew my name. But thank you is there. But yeah, don't panic, ठीक है, वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, प्रॉपरली रेस्टेड जाना है। ऐसा नहीं कि टेंशन में जा रहे हो, पूरा पूरा ना गोल घपला करके आओगे टेंशन में जाओगे तो। बिफोर द इंटरव्यूज लाइक रिलैक्स्ड माइंड से जाओ, प्रॉपर रेस्ट लेके जाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बोलो, you'll have to rely on the चाबी stealing technique, है ना। but don't worry, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। एंड देखो, इंटरव्यूज में क्या होता है, they'll definitely check your background, ऐसा नहीं है कि बिना चेक नहीं चेक करेंगे, है ना। लेकिन जो भी बैकग्राउंड है उसको एग्जैजरेट तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हो ना, no one is deducting points for that. And like be very, communicative, ठीक है, be very communicative, like, you know be your, yes, Firefly. Yeah, Kevin, like देखो, you are like, imagine you're a salesperson, ठीक है, you have to like make sure that you're selling your product, which is you, ठीक है। You have to make sure to like sound it as you are the best investment this company could ever make. Be very persuasive, ठीक है। If you want practice, interview practice, like practice interview questions with chat gpt, ठीक है, उसमें डाल दो कि like this is the company profile, this is like the job description, I'm going for an interview, ask me questions, help me prepare, है ना। utilize your utilize the things you have, ठीक है। देखो, काम नहीं बना तो चाबी तो चुरा ही सकते हो, है ना। लास्ट रिजॉर्ट वी हैव।
Exactly, exactly, Kevin. All the best. Take care. You've got this. No, Katie, he's just making excuses. Okay, like he knows he cannot do it. He doesn't have the motivation to. So like he's just blaming things on everything he can. Like, you're there, so he's blaming it on you. Next, you won't be there, so he'll blame it on his mom. His mom's out of the picture, he'll blame it on his kids. After that, he'll blame it on his ex-wife. He'll blame it on everything except, actually putting in the effort to make a difference in his life. Exactly, Katie. Yep. He's just trying to make these sorry excuses for his incompetence. But you don't blame yourself for it. You as well for trusting me with your time, space, and energy. I hope your reading resonated, and I hope I'm given the honor to read for you again. Um, okay, everyone. I think I've read for everyone in the queue. Um, I'd like to thank all of you for trusting me with your time, space, and energies. I hope your readings resonated, and I hope I'm given the honor to read for all of you again. I'll be ending the stream here. My next stream would be tomorrow. I'll see all of you then. Until then, take care of yourselves, and I appreciate you too, Katie. Yeah, and until then, bye bye.